started from the very basic, like the three states of matter. एक general introduction लेते हैं three states of matter का, and then we will move forward. Okay, so from the O levels, we know that there are three states of matter. There's no point that we are going to discuss the general three states of matter जो O levels में हम पढ़ कर आए हैं. एक normal सा introduction लेते हैं. Normal introduction ये है कि we have the solid state, the liquid state, and the gaseous state. Solid state may the particles are closely packed together. They have a very low kinetic energy. They cannot move from one place to another place. They can only rotate and vibrate at a fixed position. They have a fixed shape, huh? And high density. So this is basically all about the solid state. In liquid state, the particles have more kinetic energy as compared to liquid. उनसे ज़्यादा energy होती है. दूसरी की पॉइंट ये है कि the particles can move from one place to another place. They can also rotate and vibrate, and they can move from one place. They acquire the shape of the container. And liquids are not easily compressible. ठीक है ना? Liquid क्या है? Liquid हमारे पास easily compressible नहीं है. Okay, now I think it's working perfectly. So yes, liquids हमारे पास जो है they are not easily compressible. सही है ना? तीसरी बात gases की है. Gases, here the particles have more kinetic energy as compared to liquids. And solid, the particles can move from one place to another place. They can acquire the entire container, not the shape of the container. They can acquire the entire container, and they can easily compressible. सही ना? ये जनरल बातें हैं सॉलिड स्टेट से रिलेटेड. उसके बाद हमारे पास जो सिलेबस में है वो बेसिकली द गैसियस स्टेट है इन डिटेल. ठीक है, द गैसियस स्टेट. सो सेइंग इट अगेन, और मैं आपको शो भी कर देता हूं तो ताकि यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, which is about the three states of matter. So if I show it to you from here, and then this is the states of matter. Okay, so these are basically the properties of these states of matter, and you can see it's all the same properties जो हमने पहले पढ़ी. In solid, particles are held together by strong force of attraction. Liquid में force of attraction कम होती है, but more than solids होती है. Gases में बहुत ज्यादा होती है, more than solid and liquid. Particles in solid have a less kinetic energy as compared to liquid and gases. ठीक है, और liquid में solid से ज्यादा होती है, gases से कम होती है. In solid, particles are fixed at the position and they can only vibrate, but they can translate in liquid and they can acquire the shape of the entire container. हमारे पास कहाँ? gases में. ठीक है, clear? Solids are incompressible, mostly liquid are incompressible, and gases are compressible. So you can just revise it from here. ये बहुत आसान से कुछ points हैं. There's no need to write it down, and I'll share the notes. उसमें आपको मिल जाएंगे. So let's move towards our next, the gaseous state. देखें, we know the properties of a gases. Very weak intermolecular forces are present in gaseous molecule. The particles can move from one place to another place. There are some gas laws. If you remember, we have a Boyle's law. ठीक है ना, जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन था, या टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन था एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम. We have a Charles law, which is the volume and temperature. So keeping those laws in mind, can I say that in gases the pressure is directly proportional to the temperature? जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा. Pressure is inversely proportional to the volume. A most major part of this topic is eliminated from the syllabus, so I'm doing it as 100% as per the new syllabus. ठीक है, तो जो चीजें एक्स्ट्रा थी वो निकल चुकी हैं, कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा डिस्कस करनी पड़ेगी to complete this topic. Now you can say that pressure is directly proportional to the number of moles. ठीक है, number of particles या number of moles. जितना ज्यादा number of particles होंगे बेटा उतने ज्यादा pressure होगा. ठीक है ना? And these are basically the gas laws. If I merge these equations, अगर मैंने merge कर दूं,
So can I say that pressure is directly proportional to the number of moles, to the temperature, and inversely proportional to the volume? ऐसे ही ना? अच्छा, if I remove or if I substitute this directly proportional sign with is equals to sign, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? Constant लगाना पड़ेगा. Here R is the constant, ठीक है? NT over V. Now R is called gas constant. ठीक है? R is the gas constant. The value is 8.31 joules per Kelvin per mole. ठीक है? This is the value of R. R is the gas constant and the value is 8 point. You are provided with the values. Don't worry about it. आपको ये value given होगी. ठीक है? Now bit of rearranging this equation. And after rearranging, can I say that PV is equals to nRT? ठीक है? And this is called general gas equation. ठीक है? This is called the general gas equation. PV is equals to nRT. अच्छा, यहाँ पर the most common error that the student making in this general gas equation is the unit error. ठीक है? So here the pressure must be in a pascals. So if you have a pressure in a kilopascal, तो आप उसे multiply by 1000 करेंगे, it will convert it into a pascals. ठीक है? So if the pressure is in a kilopascal, multiply by 1000 will convert it into a pascals. Volume must be in a centimeter cube. Sorry, volume must be in a meter cube because we are talking about the volume of gas. So if it's in a centimeter cube, आप इसे divided by 1000 और multiply by 10 power minus 3 कर देंगे. Or if it's in a decimeter cube, divided by, sorry, centimeter में deci 10 होता है, multiply by 10 power, divide by 10 power 6 and divide by 10 power 3. ठीक है? सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसीमीटर क्यूब में जाता है. डेसीमीटर क्यूब को 1000 में से डिवाइड करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ मीटर क्यूब. ठीक है? So this is basically the most important unit conversion. As in all other calculation, beta, we are dealing the volume in a either centimeter cube or in a meter cube or in a decimeter cube. इसलिए मीटर क्यूब में most commonly आपसे यहाँ confusion create हो जाता है. ठीक है? R मैंने बता दिया. T is in temperature in Kelvin. And if you have temperature in a degree Celsius, तो कैसे convert करेंगे? We add 273. So it will convert into a Kelvin. ठीक है बेटा. So PV is equal to nRT and these are the unit conversion. N आपके पास number of moles हैं. Then no unit for number of moles. ठीक है? There is no unit for number of moles. Clear? So this is basically PV is equals to nRT. Clear? If I say, हम पहले से पढ़ के आए ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज मास ओवर mr. ऐसे ही है ना? सो पीवी इज इक्वल्स टू nRT में इफ आई ट्राई टू रीअरेंज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ mr, तो मैं पीवी वैसे ही रखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास ओवर mr लगा देते हैं. इट बिकम मास ओवर mr RT. एंड इफ आई डू इट फॉर mr के लिए रीअरेंज करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी mr के लिए? Small m, which is the mass in gram, RT over PV. Very important. Sometimes they ask you to rearrange the equation for mr.
ठीक है बेटा. So either most commonly you should know about PV is equal to nRT. अच्छे तरीके से याद होना चाहिए. If you know about PV is equal to nRT, pressure must be in pascals, volume in meter cube, temperature in Kelvin, and these are the unit conversion. Number of moles आपके पास n होते हैं. And if you want to rearrange it for the molecular mass या identity of gas, so mass RT over T. यहाँ याद रखिएगा जैसे हम O level से पढ़ते आ रहे हैं, M basically mass in grams है. ठीक है, m is the mass in gram. Clear? So this is basically the general gas equation for only for gases. ठीक है, we use this equation only for gases. Let's move forward and let's see how they're asking this in an exam. So let me just okay, this is not the updated file, so you have lots of irrelevant questions जो कि अभी हमने नहीं किए हैं, मतलब हमारे अब सिलेबस का पार्ट नहीं है. So let's states of matter. Okay, beta, this is the question. He says, in an experiment, why they say use data booklet? Because of the R value, which is 8.31. Okay. Okay. So I use the value of R from the data booklet in an experiment using a gas range. इतने grams आपके पास जो है वो gas है, is found to occupy इतना volume. Measure its temperature pressure of इतने pascals and 27 degrees Celsius. ठीक है. सबसे पहला काम क्या करते हैं? The first thing is volume का conversion कर लेते हैं. 83.1 should be divided by 1000, नहीं 10 power 6. ठीक है, और 83.1 को हम मल्टीप्लाई बाय 10 power -6 कर देते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ मीटर क्यूब. ऐसे ही ना, सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 10 power 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 power -6 इज द सेम थिंग. नाउ टेम्परेचर is 27 degrees Celsius plus 273, which is going to be 300 Kelvin. So temperature हमारे पास 300 Kelvin आ गया. Now, what is the relative molecular mass? We know that for molecular mass mR, the formula is mass RT over PV. Pressure is already in a pascals, so no need to convert the pressure. अब देखिए, mass is 0.1. I'm just placing my values, 0.10 multiply by 8.31 multiply by 300, and just match with the right answer, divided by P. P is 1.0 into 10 power 5 multiply by V. V is 83.1 into 10 power -6. Which option is correct, beta? In the first option, they didn't convert temperature. In the second option, इन्होंने volume को convert नहीं किया, so both are incorrect. Third option, again, they didn't convert temperature. So D is the right option. Temperature 300, 8.31, 0.10, 1 into 10 power -5, 83.1 into 10 power -6. ठीक है, आसान. So that's how you're going to solve these type of question. P1 में भी इसकी weightage है बेटा, paper 2 में भी weightage है. Now, in the similar question, again, data booklet is for the R, which is 8.31. Number of moles are given. Container volume 300 dm cube and 273 Kelvin temperature. ठीक है जनाब. So सबसे पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लेते हैं. 3.0 divided by 1000, which is equals to 3 into 10 power -3 meter cube. सही ना, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे. Now again the same temperature, 273 plus 273. अच्छा, टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, टेम्परेचर भी 273 डिग्री सेल्सियस दिया है क्योंकि केल्विन में भी द सेम वैल्यू इज देयर. नाउ P is equals to nRT over V. ठीक है, so pressure, number of moles is 1.6 into 10 power -3 multiply by 8.31 multiply by 273 plus 273 divided by volume. Volume is 3 into 10 power -3. Again, the D is the right answer.
इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं किया, इसमें गलत कन्वर्जन किया है, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं किया, अगेन द डी इज द राइट आंसर। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इजी हैं, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अगेन द सेम क्वेश्चन, पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर भी गिवन है, केल्विन में भी गिवन है, ठीक है। डेंसिटी गिवन है आइस की, देख लीजिएगा, उससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। मैं आता हूँ, फिर अभी डिस्कस कर। ओके, नाउ अगेन एक क्वेश्चन है बेटा थोड़ा सा डिफरेंट, देखिए। दिस इज नॉट अबाउट द पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस इज समथिंग स्लाइटली डिफरेंट। इसने कहा दे आर मिक्सिंग टू फ्लास्क टुगेदर, सही है ना। फ्लास्क एक्स है, कंटेन 5 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम एट 12 kPa। बिफोर मिक्सिंग फ्लास्क एक्स का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज 5 डीएम क्यूब एंड द प्रेशर इज 12 kPa। फ्लास्क वाई वॉल्यूम 10 डीएम क्यूब, pressure 6 kPa. If the flask are connected, ठीक है, at a constant temperature, what is the final pressure? Now in this question you have to apply P1 V1 is equals to P2 V2, सही ना। टोटल वॉल्यूम आपके पास, सॉरी, टोटल वॉल्यूम आपके पास है which is 15। so मैं सिर्फ पहले आपको, you have to apply it at flask X and then you have to apply it at flask Y, और दोनों प्रेशर्स वॉल्यूम्स को आपने, सॉरी, प्रेशर्स को आपने ऐड कर देना है, because they're asking about the final pressure. So if I do it on a flask X, कैसे अप्लाई होगा जनाब फ्लास्क एक्स का? हाँ, 5 into 12 विच इज इक्वल्स टू 15 into x, है ना। तो प्रेशर विच इज P2 आपके पास आ जाएगा 4 kPa, है ना। 5 into 12 60 divided by 15 is 4। अगेन फ्लास्क Y पे अप्लाई करते हैं। फ्लास्क Y क्या हो जाएगा जनाब? 10 into 6 which is equals to, after mixing the total volume is 15 and volume find out करना है, so x हो जाएगा, again the answer is 4 kPa। 4 plus 4, the answer is 8, ठीक है। and you find a similar question in the worksheet, that is question number 1। देखिए, again the very similar question, you can take the screenshot of it। Flask X contain 1 dm cube of helium at 2 kPa and flask Y contain 2 dm cube of neon at 1 kPa pressure, the flask are connected and constant pressure, what is the final pressure? ठीक है, देयर इज अ चांस, देखिए कि बहुत पहले आ चुका है ये 2002 में, सो देयर इज अ चांस कि ये अब 20-21 साल बाद इट इज पॉसिबल दैट दे माइट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन। सो दैट्स व्हाई द मोर द ओल्डर द क्वेश्चन इज, इफ इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस, इज गेटिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जितना पुराना क्वेश्चन होगा, अगर वो इस सिलेबस का पार्ट है, तो उसके रिपीट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, यानी उस जैसा किसी क्वेश्चन के आने के चांसेस। क्लियर? वन मोर लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। 22. R is 8.31. The gas law can be summarized in the ideal gas equation, PV is equal to nRT. Itne gram of ethene? Ethene is C2H4. So 28 is the MR of ethene. ठीक है? Because you need the number of moles. Vessels at a pressure of itne kPa and the temperature of 30. What is the volume? So yes, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे मैं पूछूं इथीन के, विच इज 0.56 डिवाइडेड बाय 28, कितना आ जाएगा बेटा? हम्म 0.20, these are the number of 0.02, okay, so this is basically the number of moles. Now PV is equal to nRT, apply करें and find out the volume। वॉल्यूम जो आपका आंसर आएगा, the volume is in मीटर क्यूब, आंसर आपका मीटर क्यूब में आएगा। नहीं, प्रेशर इज इन किलोपास्कल एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो जो आपका आंसर आएगा बेटा, वो मीटर क्यूब में आएगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट यही होता है। आंसर इज इन मीटर क्यूब, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ सेंटीमीटर क्यूब, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। सही, 494 centimeter cube I think is the answer for this one if I remember, but it's a easier question so you can do it later again।
Similar type of question, nothing else, just a correct unit conversion. ठीक है ना? तो PV is equal to nRT apply हो जाएगा. I need to talk a bit more about this. देखिए, basically this gas equation, which is PV is equals to nRT, is derived from gas laws. ठीक है ना? ये gas laws से drive हुआ है, Boyle's law and Charles law. Gas laws are not a part of our syllabus directly, but whatever you're doing in physics और पहले किया है, वो simple सी आपको knowledge इसकी required है. It derive from, and this is meant for an ideal gas. It is for ideal gases. Now, what is an ideal gas? They eliminated this from the syllabus, but थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा. एक पॉइंट्स पढ़ लीजिए, एक पॉइंट समझ लीजिएगा. Basically, we have a theory which is called the kinetic molecular theory. According to kinetic molecular theory, there is one point about a ideal gas. Ideal gas वो होती है जिसमें particles के दरमियान कोई भी force of attraction ना हो. ठीक है? But we know that from the dispersion forces, van der Waals forces, that we don't have any particle in this world which do not have any force of attraction. Even I said that when I'm holding this pen, there is a force of attraction created between this pen and my finger, which is called the weak dispersion forces. जहां भी electrons होंगे वहां dispersion forces present होंगी. So according to general gas theory, the ideal gas is a gas that do not have any force of attraction, no force of attraction between the particles. ये इसका एक पॉइंट है, हमें समझाना चाह रहा हूं. क्लियर? सो इसका मतलब as per this we do not have no ideal gas exist, है ना? कोई भी नहीं है. All gases are called real gases. अब सवाल यह है कि if ideal gases exist ही नहीं करती तो ideal gases का concept है क्यों? तो देखिए, being a teacher, I have a concept of an ideal student in my mind. 100% attendance हो और assessment में 100% marks आए, सारा homework time पर होता हो, CIE में भी A star आ जाए and so on. तो अब कोई भी स्टूडेंट जो है वो इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा, तो क्या मैं आइडियल स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट खत्म कर लूं? नो, द कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर. दैट्स द स्टैंडर्ड. whoever come close to this standard, हम कहेंगे इसका बिहेवियर नियर टू एन आइडियल स्टूडेंट है. जो इनमें से ज्यादा पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेगा हम बोलेंगे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. बात समझ आ रही है? इन अ सिमिलर वे, इफ यू हैव अ गैस that have a weaker force of attraction present, like the noble gases, उनकी force of attraction उनके दरमियान सबसे कम होती है, हम बोलेंगे their behavior is more ideal. ठीक है? सो हम क्या कहेंगे? द फर्स्ट की पॉइंट इज weaker intermolecular force, more ideal behavior. ठीक है? stronger intermolecular force, more deviation from ideal behavior. अब मैं आपसे कहूं कि अगर आपके पास if you have a gas in which there is very strong force of attraction present, so it deviate more from ideal behavior. ठीक है? जो इस गैस में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी वो उतना ज्यादा डेविएट करेगा फ्रॉम आइडियल. थैंक यू भाई. फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ठीक है? एज एन एग्जांपल देखिए इधर, if I ask you, you have nitrogen and ammonia, which one is more ideal, nitrogen or NH3? So we know that nitrogen is a gas, so it is a typical non-polar gas. And because of this non-polar gas, it has only weak dispersion forces present. Ammonia is a gas that have a hydrogen bonding present. Hydrogen bonding is stronger than dispersion forces or van der Waals forces. So this is more ideal. Ammonia deviates more from ideal behavior. Ammonia का deviation ज्यादा है from ideal behavior.
In the previous year, you see lots of question about this ideal behavior. As I said, this equation is this part is not directly a part of our syllabus anymore, but हम थोड़ा सा इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि if I ask you that you're applying PV is equals to nRT on both of these gases, ठीक है? PV is equal to nRT अप्लाई किया मैंने दोनों गैसेस के ऊपर, ज्यादा एक्यूरेट आंसर किससे आएगा? नाइट्रोजन विल गिव अ मोर एक्यूरेट आंसर. दैट्स परफेक्ट. ठीक है. Just make a note of it. So after this, the gaseous state, only the PV is equal to nRT is a part of our syllabus. Make sure that you do the correct unit conversion. PV is equal to nRT. अच्छा apply होगा. We get the right answer. Either it's a calculation of volume or pressure. Either it's a calculation of MR, whatever it is. ठीक है? And then the next part is basically the solid state. But around 90% of this solid state is a part of our ओ लेवल सिलेबस. वही सेम हमें यहाँ पर करना है. ठीक है. लिक्विड स्टेट नहीं है हमारे पास. देन बेटा ओके. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली द सॉलिड स्टेट. ओके. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सॉलिड्स, पहली बात, वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स. वी हैव थ्री different types of solids. Number one, ionic solids. Number two, metallic. And number three, covalent. ठीक है. Out of these three, the ionic solid and the metallic solids are 100% as it was in your O levels. ठीक है. तो हम यहीं से अपनी बात स्टार्ट करते हैं. Let's start with the ionic solids. Means I will be talking about the ionic solid like sodium chloride. It could be magnesium chloride. It could be potassium bromide or magnesium oxide. All ionic solid have the similar type of structure. ठीक है. And you remember the structure, cube बना के alternate positive negative charges लगाते थे. That's the structure of ionic solid. पहली बात key point ये है, all ionic solids have same structure. ठीक है. And the structure is called giant ionic lattice structure. Or it is also called cubic lattice structure. Giant ionic lattice structure or cubic lattice structure. ठीक है. And if I show you the structure, it looks something like this.
ठीक है, alternate positive negative charges, all ionic compound. If it would be magnesium chloride, just write Mg2 plus and Cl negative. Okay, now in this point आप red से mark हुआ है, you can see one positive charge is surrounded by 6 negative charges. ठीक है, ये जो सेंटर में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को देखेंगे तो इट इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव चार्जेस एंड अ नेगेटिव चार्ज इज सराउंडेड बाय 6. दिस इज कॉल्ड बेसिकली द कोऑर्डिनेशन नंबर. कितने पॉजिटिव को नेगेटिव ने सराउंड किया भाई, कितने नेगेटिव को, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर. ऑल आयनिक कंपाउंड हैव द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर. कितना होता है, 6 होता है नंबर, याद रखिएगा. तो यू ऑल नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम योर ओ लेवल्स. बस सिर्फ एक चीज यहां याद रखिएगा कि द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयंस. ठीक है, और अ नेगेटिव आयन सराउंडेड बाय 6 पॉजिटिव आयन. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, दे आस्क्ड अबाउट दिस कोऑर्डिनेशन नंबर वंस इन एग्जाम, दैट्स व्हाई हम इसे यहां पर डिस्कस कर रहे हैं. एंड इट्स ऑलवेज फिक्स, नो मैटर जो भी आपके पास आयनिक कंपाउंड होगा, द कोऑर्डिनेशन नंबर इज ऑलवेज 6 एंड ये हमेशा फिक्स रहता है. ठीक है, ए लेवल्स में दो टर्म यूज होती हैं. द टू टर्म्स यूज्ड आर बेसिकली द लेटिस फोर्स, सॉरी लेटिस पार्टिकल्स एंड लेटिस फोर्स. Okay, lattice particle means the particles present in a solid structure. So in all ionic compound, the particles present are positive and negative ions. है ना, the particles कौन कौन से हैं, positive और negative ions. And the lattice force is basically the electrostatic force. Or it is also called ionic bonding. ठीक है, वो आपसे एग्जाम में दे आस्क यू अबाउट दिस कि व्हाट इज द lattice particles in ionic compound, तो आप बोलेंगे positive and negative ions. Lattice force is the electrostatic force or the ionic bonding. ठीक है बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखिएगा, lattice particles and lattice force. There's nothing much to discuss about this ionic solids. हम ionic compound, ionic bonding में ये सारी properties पढ़ कर आए. Done. Let's move towards the metallic solids second. The structure is called giant metallic lattice or giant metallic, simple giant metallic. ठीक है, और simple simple giant metallic structure. And if you remember, positive and negative positively charged ions surrounded by a sea of delocalized electrons, layer type structure, layer can slide over one another, ये सारी बातें. Now, lattice particles, positive metal ion and electrons. ठीक है ना, मेटल सॉलिड स्ट्रक्चर में क्या चीजें होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन एंड सी ऑफ delocalized electrons. What is the lattice force? Again, the force is electrostatic, but we can call it a metallic bonding. All bondings are electrostatic, so you can call it a metallic bonding. Okay,
Now in this stage you should know about the all the properties of metals. इससे ज़्यादा discussion की ज़रूरत नहीं है. We have done this one in our O levels, है ना. Metals are good conductor of electricity due to the presence of delocalized electrons, है ना. ये सारी प्रॉपर्टीज हम O levels में पढ़कर आए हैं और अभी हमने मेटालिक बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया है. Why metals have high melting point? Because a strong metallic bonding is present. ठीक है. अच्छा देखो ये जो lattice force है, you have to break this lattice force to melt any solid. यानी अगर आपको किसी आयनिक कंपाउंड को, आयनिक सॉलिड को मेल्ट करना है तो आपको आयनिक बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी. If you have to break any metallic metal, then you have to break the metallic bonding because the lattice force is metallic bonding. Lattice force का मतलब होता है the force responsible for the solid structure. चाहे तो ये बात यहाँ पर लिख लें जब हमने lattice को पहली दफा लिखा है. The force responsible for solid structure. ठीक है बेटा. So this is basically the force responsible for the solid structure. So I think you know much about the ionic compounds and the metallic compounds. तो उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं. That's the detail enough. Now let's move towards the covalent solids. And we know that the covalent solids are divided into two categories. Simple molecular or giant molecular. Simple molecular like iodine, like phosphorus, like sulfur, और there is an allotropic form of carbon जिसे हम C60 कहते हैं. ठीक है, ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. This is called fullerene. This is something new. We haven't done this one in O levels. Fullerene नहीं पढ़ा. हाँ? O levels में था? ठीक है. Giant molecular, yes, diamond, graphite, SiO2, or silica, or sand, or silicon, whatever it is. ठीक है. It's very difficult to memorize all the simple molecular compounds, है ना. वो तो billions में है हमारे पास. So it is very easy to memorize the giant molecular compound, which are only these three compounds, and they are exactly the same as it was in O levels. ठीक है. So let's start with the simple molecular compound. First of all, the lattice particles and lattice force. The lattice particles in simple molecular compound are basically the molecules. Okay? अगर मैं solid iodine की बात कर रहा हूँ, so lattice particle iodine molecules होंगे. ठीक है? If I'm talking about the solid carbon dioxide, the lattice particles are carbon dioxide molecules. ठीक है? That's why they are called it is called molecular structure. Lattice force is basically the intermolecular force. ठीक है. Lattice force is the intermolecular force. जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि you have a solid water like ice, what is the lattice force? तो आप बोलेंगे hydrogen bonding. But if I ask you solid carbon dioxide, तो आप बोलेंगे dispersion forces. Carbon dioxide is a non-polar molecule, so the answer is dispersion forces. ठीक है. So any intermolecular force which is present, यहाँ पर make sure that you know that कि polar non-polar का concept clear होना चाहिए. ठीक है ना. अगर पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं. ठीक है.
अच्छा मुझे बताइए, इफ यू हैव आयोडीन इन अ सॉलिड फॉर्म, इफ यू हीट इट, इट विल कन्वर्ट इनटू आयोडीन गैस. Yes, that's basically sublime. This is sublimation. Clear? And you can see यहाँ पर भी आयोडीन आयोडीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर भी आयोडीन आयोडीन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है. हुआ क्या? हुआ ये कि ओनली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, वो ओवरकम है ना. डिस्पर्जन फोर्सेस ओवरकम. सिर्फ हमने डिस्पर्जन फोर्सेस को ब्रेक किया. क्लियर? वाटर अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में, सॉरी सॉलिड फॉर्म में है, यू हीट इट, इट विल कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड. ऑल्दो वाटर हैज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टिल प्रेजेंट. स्टीम में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस, कम होता रहता है, ब्रेक होती रहती है, स्टेट चेंज होती रहती है. याद रखिएगा, देयर इज नथिंग टू डील विद द boiling, nothing to deal with the solid structure with the strength of covalent bonding. Simple molecular structure में covalent bonding की bond length, bond strength से इसकी लेटेस्ट फोर्स का कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, आपको कोवलेंट बॉन्डिंग ब्रेक ही नहीं करनी. क्लियर? सो फ्लोरीन इज अ गैस. व्हाई इट इज अ गैस? बिकॉज इट हैज अ वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. आयोडीन इज सॉलिड बिकॉज इट हैज अ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? इन अ सिमिलर वे, इस स्टेज पे हम फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे. फॉस्फोरस इज बेसिकली अ सॉलिड. बिल्कुल जैसे आयोडीन सॉलिड है, वैसे ही फॉस्फोरस सॉलिड है. फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल. जैसे आयोडीन I2 था, फॉस्फोरस इज P4. इन अ सिमिलर वे, सल्फर, व्हिच इज अ येलो सॉलिड, एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल. सल्फर एग्जिस्ट एज S8. इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको दिखा देना, यू हैव टू ड्रॉ इट. दिस इज P4. You can see phosphorus is in a group 5 of the periodic table as nitrogen, है ना, making 3 covalent bonds. So all phosphorus molecule, चारों के चारों एटम 3 covalent bonds फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है ना? ऐसे ही नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा इसलिए नहीं होता कि नाइट्रोजन डू नॉट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स. तो फॉस्फोरस हमेशा 4 मॉलिक्यूल्स 4 एटम्स टुगेदर होते हैं, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस है 4 एटम्स. तो P4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए अपने पास जल्दी से. But it might be possible that they ask you to draw this in exam, or it might be possible कि वो आपसे पिक करने को बोले कि which one is the structure of phosphorus. बस की पॉइंट ये है कि हर फॉस्फोरस से आपके पास 3 बॉन्ड्स होने चाहिए और दे ऑल आर इंटर कनेक्टेड. सल्फर एग्जिस्ट एज, बन गया फॉस्फोरस बन गया. Then sulfur exists as S8. Okay. You can see sulfur is in the same group as oxygen. Oxygen कितने covalent bond बनाता है? 2 covalent bond. In a similar way, you can see every sulfur is making 2 covalent bond. Just try to replicate this structure. बहुत आसान है. दो दो पेयर में ड्रॉ कर दीजिए and then 2 terminals पे ड्रॉ कर दीजिए. We draw these two in a pair. देखो पहले इस वाले को ड्रॉ करो, फिर इस वाले को ड्रॉ करो, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को. ठीक है, 4 इस तरह से पेयर में ड्रॉ करो. एंड देन यू हैव टू ड्रॉ वन दिस वन. इसको यहाँ कनेक्ट करो, इसको यहाँ कनेक्ट करो. थोड़ा बहुत शेप आगे पीछे हो, बस हर फॉस्फोरस एक दूसरे से 2 बॉन्ड्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. ठीक है बेटा, तो आई होप कि दिस वन इज डन. सो फॉस्फोरस हो गया, P4 का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, एंड वी डन विद द सल्फर. नाउ फ्लोरीन.
which is a molecule of carbon with a 60 atoms together. अच्छा, ये 60 atoms देख के जहन में ये आता है कि it must be a giant molecular compound. लेकिन देखिए, in a giant molecular compound, if you look at the structure of a diamond, you have millions of carbon atoms in a very small solid structure. In this one, you just have 60 carbon atoms. Normally 60 carbon atoms एक ना होने के बराबर carbon atoms हैं. तो इट्स अ सिंपल मॉलिक्यूल, और ये सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड फुलरीन डिफरेंट शेप्स में होता है. जैसे इसकी एक शेप ये है हमारे पास, व्हिच इज दिस वन. यू कैन सी इट इज अ फुटबॉल लाइक शेप. ठीक है, और इस फुटबॉल लाइक शेप में यू कैन सी यू हैव पेंटागॉन्स एंड हेक्सागॉन. ऐसे ही ना, इफ आई जस्ट ड्रॉ ओवर इट, हाँ, यू कैन सी 1 2 3 4 5. This is a pentagon. Each carbon atom is making 1 2 3 covalent bond and contain 1 free electron. सही, तो टेक्निकली है क्या? It's a sphere, a football type structure. Okay, and within that football you have free electron, and you have millions of these footballs held together by weak dispersion forces, and there's a gap in between them. So ये electron within a sphere तो move कर सकते हैं, but between the sphere move नहीं कर. That's why it is a non-conductor of electricity. It's not like graphite, because graphite have a long layers of लॉन्ग शीट्स ऑफ लाइक द लेयर्स की शीट्स होती हैं, वहां तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन विद इन अ बॉल तो मूव करेंगे, बट फ्रॉम वन फुटबॉल लाइक C60 टू अनदर C60 दे कांट मूव. ठीक है, इसका हाँ सिंपल मॉलिक्यूलर, वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज these balls are held together by weak dispersion forces. That's why it is a simple molecular compound. C60 ब्रेक नहीं होगा, C60 सारे अलग अलग हो जाएंगे. जैसे Cl2 अलग अलग हो जाता है, C60 अलग हो जाएगा. And if you just talk about simple C60, it is in a gas form. ठीक है, clear? So this is basically, and you can see there are pentagons and hexagon. Yes, and you can see this is a hexagon. की पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. Each pentagon is attached to 1 2 3 4 5 hexagon, and each hexagon is attached to 3 pentagons. If you look at the structure, तो अगर आपके पास आप किसी भी hexagon को देखेंगे तो 1 2 3 pentagons के साथ अटैच हुआ होगा. क्लियर? ये सारे की पॉइंट्स अगर हम लिख लेंगे तो हमारा ये टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. So let's talk about fullerenes. The structure which I showed to you, the structure of a football like, this is called Buckminster fullerene. ठीक है, clear? It consists of the Buckminster fullerene. It consists of 12 pentagon and 20 hexagons. Okay. Next key point: each pentagon is attached to 5 hexagons, and each hexagon is attached to 3 pentagon. Each carbon atom is making 3 covalent bonds. And have 1 free electron. C60 is हाँ नॉन कंडक्टर, ये याद करना पड़ेगा बेटा. As electrons cannot move out of this sphere. यहां पर याद रखिएगा,
लेटेस्ट पार्टिकल्स क्या हैं आपके पास? C60 मॉलिक्यूल। लेटेस्ट फोर्स आपके पास क्या है बेटा? डिस्पर्जन फोर्सेस, वेंडरवॉल फोर्स। ठीक है? Like a giant molecular compound, you do not have to break the force of attraction present between the carbon atom. वो ब्रेक नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ डिस्पर्जन फोर्सेस ब्रेक करनी है, क्योंकि ये सॉलिड इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट। ड्रॉ करने के लिए ये नहीं आएगा ऑब्वियसली. So they might ask you the MCQs about this point. Each hexagon is attached to pentagon and this and that, and then that's it. Okay, the last part of this chapter is basically the structure of diamond, graphite, and SiO2. Is there anything different from O levels? Nothing. Exactly the same as O levels. So I'm just going to show you the structure, और हम वहाँ कुछ बातें एक दफा recall कर लेते हैं, and then we will wind it up. There's no point that we should write all these points back again. So this is the structure of diamond. Okay, in this structure you can see each carbon. It is a tetrahedral arrangement. Lattice particles are carbon atom. Okay, lattice force is a covalent bonding. Okay, each carbon atom is making 4 covalent bonds, do not have any free or delocalized electrons. Okay, so it's a non-conductor, insoluble in water, being a covalent compound. So, and very high melting point. This is the structure of diamond, and this is the structure of graphite. You can see in graphite, each carbon atom is making 3 covalent bonds. Graphite has a layer type structure, and these layers are held together by weak dispersion forces. ऐसे ही है. और इट्स अ गुड कंडक्टर विद इन अ लेयर. विद इन अ लेयर यानी लेयर से एक लेयर से दूसरी लेयर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते. इट्स अ गुड कंडक्टर विद इन अ लेयर, नॉन कंडक्टर बिटवीन द लेयर. सही. एंड देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2. Tetrahedral arrangement again. Each silicon is bonded to 4 oxygen and each oxygen is bonded to 2 silicon. सही है. तो इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर देख लेते हैं ताकि फिर हमें उसमें confusion. Now, the next one, which is the third one, like the second part, is giant molecular graphite. Giant molecular structure. ठीक है. इन अ जाइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दो बातें कॉमन है, हमेशा याद रखिएगा. पहली बात, लेटेस्ट पार्टिकल्स आर atoms and the lattice force is a strong covalent bond. You have to break all these covalent bond to melt it, otherwise ये melt नहीं होगा. ठीक है. Clear? Now let's talk about the structure of diamond. Okay. So this is the structure of diamond. The key point is each carbon atom is making to bonded to 4 other carbon atoms. ठीक है? So first key point, each carbon bonded to 4 carbons.
No free electrons. Very stable. Tetrahedral arrangement of carbon atoms. ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन इज वेरी हार्ड एंड रिजिड. ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड का होता है, इसलिए उसके बारे में हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. SiO2. SiO2 have the similar structure. ठीक है, same as diamond. Lattice particles. Silicon and oxygen atoms. Lattice force. Covalent bond. ठीक है बेटा. And if you look at the structure, this is the structure of SiO2. Clear? This is a simplified form. बस दो की पॉइंट याद रखिएगा बेटा कि each silicon is bonded to 4 oxygen, and it's quite clear from the simplified structure. Each oxygen is bonded to 2 silicon. ठीक है. एंड द सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर से आपको ये बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि ईच ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है. द रेड से हमारे पास दिस इज बेसिकली ऑक्सीजन and the black one is basically silicon. No need to draw it, but you just know how what is the silicon and which one is oxygen. Diamond की तरह draw करना है, and that's it. The next and the last one is graphite. Okay, beta, this is the structure of a graphite. And you can see in this structure, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atom. 1, 2, 3. ठीक है. And have 1 free electron. Graphite is soft due to its layer type structure. Good conductor,
विद इन लेयर। ठीक है, ये बात समझने वाली है बेटा। इफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये गुड कंडक्टर है विद इन अ लेयर, सही है। बट इन दिस वर्टिकल डायरेक्शन इट इज अ नॉन कंडक्टर। Electron cannot jump from one layer to another layer, ठीक है। तो in this direction is a non-conductor, it's a good conductor within a layer, एक layer में ये good conductor है और between the layer it is a non-conductor। So you know that अभी आपने देखा कि almost the entire chapter PV is equal to nRT के अलावा the rest of the chapter is exactly the same as it was in O level, ऐसे ही ना, nothing new, nothing special, but सिर्फ लेटेस्ट फोर्स लेटेस्ट पार्टिकल्स वाली बातें जो है you have to do it with the A level style, otherwise this chapter is exactly the same। पहले कुछ चीजें थी इसमें करने वाली, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बहुत डिटेल में था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट से। now this lecture this topic is almost done, so they're going to ask a question from this topic either in MCQs, mostly in MCQs chances ज्यादा है, by mixing it with बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग के साथ एक आध एमसीक्यू इसके पूछ ले जाएंगे। सो वी डन विद दिस चैप्टर एंड देन वी विल सी डू सम अदर चैप्टर इन नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। देयर इज नथिंग मच अबाउट द पास्ट पेपर, कुछ इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंपल 5 डायमंड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। डू मोर प्रैक्टिस फॉर द पीवी इक्वल टू एनआरटी, यूनिट कन्वर्जन ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स द एग्जामिनेशन पेपर। ओके, सो कीपिंग इट टिल हियर।